Hello, I am Dr. Shyam Aggarwal, Chairperson, Department of Medical Oncology at Sir Ganga Ram Hospital. Ganga Ram Cancer Center was inaugurated last year by Honorable President of our country, the Murmu. We have a comprehensive care for all patients who are suffering with cancer. I'll focus on 4 or 5 departments which are essential for diagnosing and strategizing the treatment for cancer patients. Number one is Department of Pathology. All patients with cancer require a histopathology diagnosis by getting a biopsy. And today, our Department of Pathology is one of the best in the country because besides pathology, we are also supposed to look at immunohistochemical markers and FISH test, and so many other investigations are required to reach a correct diagnosis. Number two, if somehow biopsy is not possible, cytopathology department, which is again one of the department of excellence in our hospital, can give us a clue towards the diagnosis and even establish the diagnosis for patients with having a lump. And again, in cytopathology, immunohistochemical markers are possible, which we are doing in our cytopathology department. Thirdly, the Department of Interventional Radiology. It is extremely critical because many a times we have lumps and areas of disease inside the abdomen, inside the bone or lungs, etc., where an ultrasound guided or CT guided biopsy or a FNAC is required. So our Department of Interventional Radiology not only offers guided biopsies and FNACs, but also they offer a facility of treatment, for example, a TACE, TARE and the PTBD, etc. So our Department of Interventional Radiology is again rated as one of the best in the country. Hematology lab is again an integral part of a cancer center because hematological malignancies or cancers which have spread to the bone marrow or peripheral blood, they require a peripheral blood examination with flow cytometry and bone marrow testing. They also require cytogenetics and also require a molecular testing. So the hematology lab is equipped in our hospital to perform all these tests. Oncology is the era of precision medicine today, and molecular testing is become almost buzzword in patients with cancer. And we have an extensive molecular department or molecular oncology department and genetics department who are performing molecular testing not only on the tissue but also on the peripheral blood called liquid biopsy. So we are heading towards the era of ctDNA, and our Department of Molecular Oncology and Genetics are capable of performing these tests. Thank you very much. Hello, I am Dr. Arun Gupta. I am Chairperson, Department of Intervention Radiology, Sir Ganga Ram Hospital. So every day we see the cancer patients, and one question we always ask, Doctor, biopsy की तो फैल तो नहीं जाएगी? So I am here to clear your myth that the risk of spreading of cancer because of the biopsy is negligible. When we do the biopsically, endoscopically, like luminal organs, intestine, there is no risk. What about the risk about the solid organs, liver, spleen, kidneys? The risk is 1 out of 1 lakh patients. And especially it is very important to get the correct diagnosis, to get the correct treatment. अगर हमारे पास diagnosis ठीक से नहीं बनेगी तो हमारा treatment ही सही. Today the chemotherapy of various cancers depends on the immunocytological markers, immunohistological markers, and that can be done only on the biopsy. We do the needle based biopsy, which are minimally invasive and very less painful to the patients. Previously it used to be the incisional biopsy, but most of the time it is now the needle biopsy that has taken over the major surgical procedures, and the cancer journey has become very easy for these patients. So अगर आपसे कोई कहे कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है, उसको समझाइए और खुद भी ये बात समझिए कि बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है. What about the risk factors of the biopsy? So even with the critical organs of the body like lungs, liver, the risk of any major complication is very less, and we have all sophisticated equipments where we can exactly pinpoint the smallest of the lesion and
can take the biopsies. Hello everybody, I am Dr. Sonia Badwal. I am chairperson and senior consultant Department of Pathology, and I am specially looking after the histopathology division of Sir Ganga Ram Hospital. Now, as far as the operations of histopath division is concerned, we are providing not only the diagnostic facilities but in addition the TNB training as well as the technical training of the department and the oncology, both the medical oncology as well as the surgical oncology. They form the integral part of this diagnostics and the training. Now, the facilities of this department are state of the art. We are equipped with one of the most advanced equipment which deals with the ancillary techniques which are involved in antecedent diagnosis of the cases as well as the prognostic and the predictive markers which are required for the treatment of the patient, especially in oncology scenario. The facilities we have are fully automated immunohistochemistry stainers, which include a very advanced FDA-approved benchmark Ultra Ventana and Ventana GX, as well as the what we call as another equipment which is sort of a supportive equipment to this. Now, besides the diagnostic use, we are also doing the ancillaries for treatment initiation in the form of PDL1 staining, then MSI staining, Claudin 18, NTRX. These are some of the agnostic markers which are being used in the advanced management of the oncology cases all across the spectrum. Now, besides that, as far as the surgical oncology is concerned, we have frozen sections facility wherein we are able to give a fast and rapid diagnosis wherein the surgery, how a surgeon has to further go about managing his case and increase or reduce the surgical access of the patient is done. Besides this, we have also newly introduced the fluorescent in situ hybridization facility. These are not only the silver or CISH associated, which we are doing on a Ventana platform. This includes the EBER-ish and the Kappa Lambda-ish for hematolymphoid malignancies, as well as we have dual-dish for HER2 staining, and this is very advanced and very few hospitals have. And the importance is that it gives you very fast diagnosis in HER2 equivocal cases within 8 to 10 hours of initial HER2 staining, so that the treatment can be initiated rapidly by the oncology colleagues. FISH, that is the traditional FISH lab, is also in-house facility of the department wherein all molecular signatures, especially again in HER2, brain tumors, that is 1p19q. Then we have CMYC for lymphoma, MYC-N for neuroblastomas, so on and so forth. And another thing in the end I want to say is that our lab is accredited. So all these tests are within the purview of NABL accreditation, which increases the confidence of the patients in our lab. So that is what in brief I have outlined, and anything else if you wish to know, I would be most happy to help. Thank you. Hello everyone, I'm Dr. Pooja Bakshi, Director and Senior Consultant from Department of Cytopathology. We are a dedicated specialized field of pathology focusing on cytopathology, wherein we cover services which are often the first line of investigation, like fine needle aspiration cytology or FNAC, wherein we do not only for superficial lesions but also for deep-seated organs, and that is why we play a very crucial role in cancer management and therapy, because we target lesions in a very minimally invasive way in cytopathology with FNAC, and the tissue that we get is good enough for not only for diagnosis but also for performing ancillary testing, so that we give not only the diagnosis of malignancy or cancer but also are able to accurately subtype what type of tumor is it, and also do further prognostic biomarkers like EGFR, PDL1, which are required for therapy decisions in cancer. So with limited tissue available in a minimally invasive way,
we are able to give a lot of answers for cancer diagnosis and management. We have state-of-the-art facility with all the latest equipment, and we are recognized nationally and internationally for our services, not only for FNAC but also for effusion cytology, that is the body cavity effusions, where we give metastasis of tumor and therefore help to diagnose and stage a disease, also for brushing, and also comprehensive cervical cancer screening, wherein we are one of the first in northern India to offer this facility with liquid based cytology for cervical cancer screening, that is the pap smear, and the high risk HPV DNA testing. So these two together not only help us to screen for cancer cervix but also guide management further for these patients. So cytopathology has evolved as a cornerstone for cancer diagnosis and management with all these latest facilities that we provide, and helps our oncology services for providing diagnosis and precision oncology management decisions. So we excel in doing endoscopic FNAs, that is endoscopic ultrasound guided FNA and endobronchial ultrasound guided FNA. And by this technique, we are able to target deep-seated lesions not only in the chest area but also deep-seated lesions in the abdominal areas like pancreas, gallbladder, liver, and by this technique we are able to offer diagnosis, and we get referrals from all over the country and even internationally for this diagnosis, and we are able to give diagnosis as well as stage the tumors and give further ancillary tests like IHC and prognostic biomarkers, also with extended NGS panels now for molecular testing. So with this comprehensive services of diagnosis and management decisions being made on cytopathology services, we are a cornerstone and guide further cancer management and therapeutic decisions. Thank you so much. Hello, I am Professor Dr. Jyoti Kotwal. I am the head of the Department of Hematology and Molecular Medicine at Sir Ganga Ram Hospital. I am also the head of the DRNB Clinical Hematology Program for the National Board of Examination in this hospital, where we are training in the super specialty of hematology. And my department has a laboratory which is a hematology laboratory, a flow cytometry laboratory, and also we have a full-fledged molecular medicine department which does all tests, molecular tests. आजकल सब genetic test, molecular test, तो 100 तरह के molecular test, next generation sequencing और liquid biopsy molecular प्लस लिक्विड बायोप्सी फ्लो साइटोमेट्री। तो आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि कैंसर के लिए लिक्विड बायोप्सी क्या है। लिक्विड बायोप्सी तो पेरिफेरल ब्लड में आप एक नीडल प्रिक से ब्लड निकालते हैं और उसमें अगर हम कैंसर तो उसको लिक्विड बायोप्सी कहा जाता है। तो हेमेटोलॉजी में लिक्विड बायोप्सी होती है क्योंकि बहुत सी ब्लड कैंसर्स को हम पेरिफेरल ब्लड पे ही डायग्नोज करते हैं। फिर जब हम ब्लड कैंसर का इलाज करते हैं, अब ब्लड कैंसर होते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक नहीं है। माइलॉइड ल्यूकीमिया 10 तरह के हैं। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया बी, टी, प्री बीएलएल, काला पॉजिटिव बीएलएल, मैच्योर बीएलएल, तरह तरह के होते हैं, उनके प्रोग्नोसिस अलग होते हैं। उसी तरीके से टीएलएल होता है। फिर क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, उसमें भी बी और टी भी अलग होते हैं। और भी कैंसर्स होते हैं जैसे कि लिम्फोमा है, मैंटल सेल है, मार्जिनल जोन है, उसके सेल्स भी बोन मैरो और पेरिफेरल ब्लड में आते हैं। और इस सब का डायग्नोसिस हमारे डिपार्टमेंट में ही होता है। हम बोन मैरो करते हैं, पेरिफेरल स्मीयर के कौन से सेल्स हैं उस पे हम सेल के ऊपर सीडी मार्कर्स करके डिजीज बताते हैं। और जब इलाज हो जाता है, पेशेंट सबको लगता है बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उसमें एक आजकल आप सब लोग बात सुनते हो एमआरडी, मिनिमल रेजिडुअल डिजीज, उसको मेजरेबल रेजिडुअल डिजीज, वेरी वेरी हाई सेंसिटिविटी से जिसको पिकअप कर, एक सेल हम 10 to the power of 5 सेल्स में पिकअप कर, 10 लाख, 1 मिलियन, 5 मिलियन सेल्स में भी एक कैंसर सेल को पिकअप करते हैं, जिससे आगे डिसाइड हो के पेशेंट को और क्या ट्रीटमेंट दे, फॉलो अप करना है, कहीं डिजीज वापस आने का चांस है वो भी एमआरडी से पता चलता है। तो वो हम फ्लो साइटोमेट्री पे करते हैं। हमारे पास माइलोमा एमआरडी, मल्टीपल माइलोमा आप लोगों ने सुना होगा, माइलोमा एमआरडी हम करते हैं हाई सेंसिटिविटी से। बीएएलएल, बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, टी ल्यूकीमिया, सबकी एमआरडी हम फ्लो साइटोमेट्री से। इसके अलावा हम माइलोमा का पूरा वर्कअप, फ्री लाइट चेन, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनोफिक्सेशन, फिर उनको फॉलो अप रिस्पॉन्स के लिए उन पे करते हैं। हमारा जो मॉलिक्यूलर डिपार्टमेंट है उसमें सब कुछ जो
कैंसर, ब्लड कैंसर के लिए होना चाहिए सारे टेस्ट हैं, 100 तरह के टेस्ट। हम तो कोई ब्लड कैंसर आता है, इमीडिएटली 48 घंटे के अंदर हम बताते हैं कि कौन से टाइप का AML है, और 48 घंटे में ये भी पता एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया है तो इसको सिर्फ एक विटामिन और ट्रांसरेटिनिक एसिड या आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जाएगा, इसको बड़ी बड़ी कीमो देने को, कीमो दिया तो इसको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब चीजें हम फटाफट बताते हैं कि ये किस तरह का है। और एक्यूट माइलॉइड अगर ल्यूकीमिया है तो आजकल नए ड्रग्स आ गए, एंटी FLT3 ड्रग्स, एंटी IDH ड्रग्स, जिससे पेशेंट इंप्रूव होता है। तो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करके कि FLT3 ITD म्यूटेशन है कि IDH1-2 म्यूटेशन है वो बताते हैं। और फिर जब इलाज हो जाता है तो हम मॉलिक्यूलर मेथड से मिनिमल रेजिडुअल डिजीज, जिसकी सेंसिटिविटी फ्लो से भी 1 लॉग ज्यादा है, 10% ज्यादा है, वो भी हम बताते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का MRD हम मॉलिक्यूलर से करते हैं। तो ये तो गया हेमेटोलॉजी। आज की डेट में टी सेल लिम्फोमा के लिए TCR जीन रीअरेंजमेंट यहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ TMH मुंबई में हो रहा है, TMC मुंबई में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी सेल्स हैं, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी टी सेल्स हैं कि ये लिम्फोमा है, उसके लिए TCR जीन रीअरेंजमेंट चाहिए होती है, ये टेस्ट भी। अब आगे सॉलिड कैंसर्स में। सॉलिड कैंसर्स में हमारे पास 25 तरह के NGS टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, छोटी म्यूटेशंस हैं, टारगेटेड म्यूटेशंस हैं, लंग कैंसर, मेलानोमा, थायराइड कैंसर, हर सॉलिड कैंसर के लिए हम और जहां कैंसर नहीं पता फैला हुआ है तो उसके लिए हम CGP करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जीनोमिक प्रोफाइलिंग, जिसमें 500 म्यूटेशंस, ट्रांसलोकेशंस, RNA DNA बेस्ड टेस्ट, माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी देखते हैं और ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन भी देखते हैं। तो ये सब टेस्ट हेल्प करते हैं पेशेंट के डायग्नोसिस में, टारगेटेड थेरेपी में। आजकल कीमो के अलावा टारगेटेड नॉन कीमोथेरेपी आ गई है कैंसर के लिए, उसके लिए। और आया सॉलिड कैंसर में लिक्विड बायोप्सी। सो सॉलिड कैंसर में लिक्विड बायोप्सी हो गई। सर्कुलेटिंग सेल फ्री DNA, जो ब्लड में DNA, वो हमारा DNA, हमारे सब में थोड़ा सा सेल फ्री DNA होता है, क्योंकि हमारे कुछ सेल नॉर्मल मरते हैं रोज के रोज, वो सेल फ्री DNA थोड़ी क्वांटिटी का होता है। पर ट्यूमर का सेल फ्री DNA अगर आएगा तो सेल फ्री DNA बढ़ जाएगा। तो हम वो ट्यूमर सेल फ्री DNA से सर्कुलेटिंग ट्यूमर DNA एक्सट्रैक्ट करके हाई सेंसिटिविटी से उसकी म्यूटेशंस भी बताते हैं। ये हमारे पास हर तरह के सॉलिड कैंसर के लिए अवेलेबल है। पर लंग कैंसर में वर्ल्ड ओवर ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर हो गया, इंडिया में नहीं है। पर हमारे यहाँ एक कॉम्बो कोड है, लंग कैंसर NGS बाय सेल फ्री DNA एज वेल एज बाय टिश्यू बायोप्सी। अब लंग कैंसर अगर किसी को होता है तो छोटा सा ट्रू कट नीडल बायोप्सी हो, उसमें जो म्यूटेशंस मिलती हैं टारगेटेबल कई बार नहीं मिलती, पर ट्यूमर है तो हो सकता है 30% ज्यादा म्यूटेशन सेल फ्री DNA में। इसीलिए ये हमने कॉम्बो कोड बनाया है और दोनों NGS करके हम पेशेंट के लिए बता देते हैं कि इस पेशेंट में ये टारगेटेबल म्यूटेशन है, आपके पास इनकी EGFR म्यूटेशन है या KRAS म्यूटेशन है, इसका आप ट्रीटमेंट दे सकते। हम क्वांटिटेटिव PCR भी करते हैं, जिससे हम डिजीज मॉनिटरिंग करते हैं, चाहे वो CML में हो, चाहे KRAS EGFR म्यूटेशंस हो, उसको हम बताते हैं कि थेरेपी के बाद कितना कम हो गया हर तरह के कैंसर में जहां पर ये म्यूटेशंस। तो हमारा ये जो डिपार्टमेंट है हेमेटोलॉजी और मॉलिक्यूलर मेडिसिन, ये सर गंगा राम में एक यूनिक फैसिलिटी है, सर गंगा राम हॉस्पिटल में, और इन हाउस है। तो पेशेंट्स के लिए सही डायग्नोसिस सही टाइम पे और थेरेपी के बाद सही तरह की पेशेंट की मॉनिटरिंग हो पाती है कि सही वर्ल्ड क्लास की थेरेपी कैंसर की हमारे यहाँ पेशेंट्स को मिल पाए। हमारे डिपार्टमेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी इन्वॉल्वमेंट है। हमारे हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारा स्टेम सेल यूनिट है और उसके लिए भी स्टेम सेल का एसे और स्टेम सेल कैसे बिहेव कर रहे हैं वो भी टेस्ट हम करते हैं। और हम और भी तरह तरह के टी सेल एक्टिवेशन, बी सेल एक्टिवेशन, NK सेल एक्टिवेशन बाय फ्लो साइटोमेट्री, ये टेस्ट भी करते हैं जो कि स्टेट ऑफ आर्ट टेस्ट हैं। और एक रूफ के नीचे इतना सब कुछ शायद कहीं हिंदुस्तान में हो जो इस अस्पताल में किया जाता है। थैंक यू। Namaskar, I am Dr. Ratna Dua Puri and I am the chairperson and professor of genetics in the Institute of Medical Genetics and Genomics at Sir Ganga Ram Hospital. Today I am going to speak to you on hereditary cancers. We know that about 10 to 15% of the cancers run in families. They may be the same type of cancer or they may be slightly different cancers but having a common origin. And therefore, if there is any member in your family that has cancer, it is important to consult a genetic doctor to understand if we can find a change in a blood sample
which can explain the cancer in the family. Now, these cancers can happen in young children, they can happen in young adults, or slightly older women. And what is the advantage of doing this? The implication of finding a change in a gene that is associated with cancer is one for the appropriate therapy for that specific gene mutation, and second is that we can test other members in the family whether they are at risk of having cancer or not. And just in case they are at risk of having cancer, there are very, very specific protocols which are very important for screening and early detection of cancer so that the treatment can be the best. And I think it's very important to understand that this is of great importance because it can prevent a full-blown cancer. You find something early, it is easy to treat. And all these facilities are available under one roof in Sir Ganga Ram Hospital. So if there is a family history of cancer, please do visit, and the genetics department, the oncology department, and we can perform the tests like the hereditary cancer panel, which is done on a blood sample, and sometimes by this form of next generation sequencing, we may not find the change in the gene, and so the other technology, which is the NLPA, to find the change in the gene is also available. Thank you. And I'm just going to remind you of the very, very famous actress Angelina Jolie, who in 2013 revealed to the world that she has a BRCA1 mutation. She was not symptomatic. She did not have any features of early cancer, but because she had done the test and it was known that she was at a high risk for cancer, she could undergo the therapies and the treatment and the surgery so that she does not develop a full-fledged cancer. And so therefore prevention is very important, and this is only possible by doing the genetic test in a blood sample. Namaskar, I am Dr. Vandana Arya, Senior Consultant in Department of Molecular Medicine, which is a part of Hematology Department. We here in this department are taking care of the molecular workup of hematological and oncological diseases, specifically cancer. So हमारी लैब में कैंसर के सबसे छोटे टेस्ट से लेकर एक एडवांस टेस्ट तक सब कुछ होता है, जिसमें हम लंग कैंसर, कोलन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर एंड मेटास्टेटिक डिजीजेस सारी चीजें डील कर रहे होते हैं. उसमें हमारा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक राइट नाउ इन द गाइडलाइंस, विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द कैंसर्स, वो भी हमारे यहाँ पे होता है. एंड वी हैव वन वेरी स्पेसिफिक टेस्ट विच इज नोन एज कंप्रेहेंसिव कैंसर जीन प्रोफाइलिंग इन ऑल द मेटास्टेटिक ट्यूमर्स, जो कि बताता है कि इफ देयर इज एनी टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल फॉर दैट कैंसर, और मे बी सम मार्कर्स आर देयर जो कि कोरिलेट किए जा सकते हैं कि कैंसर कितना फैल सकता है. इस चीज में भी ये सारे टेस्ट हेल्प करते हैं. तो ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली इनकम्प्लीट विदाउट मॉलिक्यूलर टेस्टिंग आज के टाइम पे. सो we have one very important test like liquid biopsy, which is also known as सेल-फ्री DNA बेस्ड टेस्ट, जो कि अगर पेशेंट के पास अपना टिश्यू फिनिश हो चुका है या वो रीबायोप्सी कराने में इंटरेस्टेड नहीं है, इन दैट सिनेरियो दे कैन गिव दी पेरिफेरल ब्लड सैंपल और हम उससे सेल-फ्री DNA आइसोलेट करके एक टेस्ट करते हैं जो कि इक्वली और इवन मोर सेंसिटिव होता है देन द टिश्यू बायोप्सी. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो पे होता भी नहीं है. वी आर प्रोवाइडिंग हियर इन आवर लैब फॉर द लंग कैंसर्स एज वेल एज फॉर द पैन कैंसर स्क्रीनिंग, जिसमें आप कोई भी तरह के कैंसर के लिए टेस्टिंग कर सकते हो. वी हैव वेरी स्पेसिफिक टेस्टिंग फॉर द क्लोनैलिटी असेसमेंट ऑल्सो, विच इज देयर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रिएक्टिव कॉजेज फ्रॉम द मेलिग्नेंट कॉजेज, जहां पे हम क्लोनैलिटी टेस्टिंग करके पेशेंट को बताते हैं कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है. सो ये सारे टेस्ट सारा कुछ अवेलेबल है इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन लैब हियर इन द हॉस्पिटल. ऑल द टेस्ट आर बीइंग डन इन हाउस, वैलिडेटेड इन हाउस, एंड वेरी फ्रीक्वेंटली वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द एसेज. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, मिथाइलेशन स्टडीज फॉर MGMT जीन्स, फॉर MLH1 हाइपरमिथाइलेशन, ये भी किए जाते हैं लैब में, जो कि MGMT मिथाइलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्रेन कैंसर्स. वी हैव कॉम्बो पैनल फॉर द मिथाइलेशंस प्लस NGS एनालिसिस, जो कि ब्रेन कैंसर पेशेंट्स में इस्तेमाल की जा सकती है. सो ये सारे टेस्ट आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हेल्पफुल हैं इन कैंसर मैनेजमेंट. कैंसर मैनेजमेंट इज कम्प्लीटली अधूरा है जब तक के लिए आप मॉलिक्यूलर टेस्टिंग नहीं करवाते. थैंक यू.